Okay, so we got to go ahead to begin our session. So once again, good evening everyone. Myself, Dr. Rijul Agarwal. I am the orthodontic faculty at DAMS. So once again, we are back with the INICET masterclass for your upcoming INI exam scheduled on 9th of November. So few days remains before that exam, and we are meeting. I think some of you must be high in your holiday spirits. Okay, Diwali is around the corner. Lot of festivals are there. Okay, but as I said, festivals will come next year as well, but the time which is gone won't come back. True, the exam will also again come back, but the time for this period will never come back. Okay, so I hope you guys have your priorities set and are all the way for studying for the upcoming exam. My request to all of you, those who are listening to me, to not to take this exam as lightly that we are underprepared or we are just prepared with few subjects only, so उसमें से कितने marks आते हैं and give that exam with that attempt. The exam is not considered like that. Okay, whatever marks you score will be the marks which you will be of the total. It's not something which you can divide and say that out of, okay, 5 subjects I've studied, so 5 में से मेरे इतने हैं, I'm happy. No, it's never gonna happen, and this is not the right way to motivate yourself as well. So give this exam as an exam which is of your full hearted attempt with the thought process that of getting selected. Okay, with each passing year, INI are adding up seats. Okay, new AIIMS are opening up, seats are getting increased. So I think this is a golden period opportunity for you guys to get into one of the premier institutes of India. Okay, at our time hardly there was the seats for in IIMS used to be in single digits, and reservations हटा के तो मतलब it was a laughing stock. Now at least you guys are getting seats in double digits and in multiple branches as well. Okay, so now I'm not comparing anything, I'm just motivating you guys to study and consider this exam. Imagine that you get selected, then you guys won't have to worry about the NEET exam as well or the upcoming any exam. You'll be done and dusted for life. So with that thought process, give this exam. Okay, so once again, good evening everyone. Myself, Dr. Rijul Agarwal. I'm the orthodontic faculty at DAMS. So today we are going to take up the discussion of the subject of orthodontics from the November 2024 INICET exam. So I have told you before as well, the pattern which I have noticed regarding INI and especially for orthodontics is that in the November exam the questions of orthodontics are less. I don't know what pattern other subjects follow, but as regard to my subject, the questions are less in the November exam, whereas in the May exam the questions are more, and sometimes they are so much like in the May 2025 exam that it comprises approximately 25 to 30 questions came. But nevertheless, each and every question is important and can jump your rank from hundreds to thousands as well. One negative mark or one plus one or minus one can change your result. You know the importance of this. Okay, so beginning with the first question, I hope to have maximum amount of participation from the people listening. So formation of maxilla happens by which of the following mechanism? Mesenchymal condensation, endochondral ossification, persistence of zygoma or malar cartilage throughout life, or loss of condylar cartilage just before birth. So this is not an exam which I am conducting on the live session. I am here to clear your doubts, to point you or to make you understand if there is the problem in the concept,
So even if you are wrong, there won't be an issue because I am no one to judge. Yeah. So I wait for a minute if any of you guys wants to answer, otherwise I'll proceed ahead. This particular November 2024 exam had a peculiar pattern that it had maximum questions from growth, a topic which is mostly ignored by students. So when this paper came, I felt very happy because during my classes, students are, I take approximately 1 to 1.5 to 2 days to take up growth during a session. Okay, so people are annoyed by me that why so much time is devoted towards it. But when this paper came up, maximum amount of questions were from this topic, from growth, in November exam. So this sort of changed the perception of the students. Okay, so we have one person answering as option B, that is endochondral ossification. Okay, so I'll tell the correct answer. The correct answer is option A, that is maxilla is purely intramembranous. Mandible comprises of both intramembranous plus endochondral. Cranial vault is also intramembranous. Okay, so to elaborate up on this point, you know the difference between intramembranous and endochondral ossification. In simple terms, endochondral means पहले कार्टिलेज आएगा, फिर उसके ऊपर बोन बनेगी. Intramembranous means direct bone comes up. Okay, so mandible is both. Some parts are intramembranous, some parts are endochondral. Maxilla and cranial vault are purely intramembranous. Cranial base is endochondral. Ethmoid is endochondral. Occipital and sphenoid is mixed. Sphenoid particularly, different parts are formed by different ways. So just remember this table, really important for you. Okay, so moving ahead, in a 5-year-old child, how many growth centers are present in the mandible? In a 5-year-old child, how many growth centers are present in the mandible? D. Okay, anyone else? Okay, so the correct answer is option A, that is 2. So in mandible, the primary ossification centers are 2 in number, located in the mental foramen area.
lateral to the Meckel's cartilage. Okay, at the junction of the bifurcation of the inferior alveolar nerve into mental and incisive branches, and the ossification proceeds both antero-posterior. So what other points you should know? Maxillary ossification centers, both primary and secondary. Okay, next, growth site growth center में difference, displacement plus drift, जिसमें आ जाता है primary and secondary displacement, that is the topic on growth movements. Okay, I think that's all. So इंट्राएम्ब्रियोनिक ग्रोथ ऑफ द मैक्सिला एंड मैंडिबल डेंटिस्ट्री में यार दो ही तो बोन इंपॉर्टेंट है, मैक्सिला मैंडिबल सबसे ज़्यादा. उसकी पूरी एनाटमी मतलब बनने से लेकर टाइम ड्यूरेशन से एंड तक आई थिंक यू शुड बी अवेयर की, मतलब रात को भी नींद में भी पूछे यू शुड बी एबल टू टेल द ईच एंड एवरीथिंग. किस टाइम पे कौन सा ड्रग इफेक्ट करता है, उससे क्या सिंड्रोम हो जाते हैं, सब कुछ एक स्टोरी की तरह यू कैन विजुअलाइज. एंड इट विल कवर नॉट ओनली ऑर्थोडोंटिक्स, पैथोलॉजी, ओरल पैथोलॉजी, सर्जरी एंड ऑल दैट, वेरियस सब्जेक्ट्स. ओके, अगर इसको ऐसे माइंड मैप करते हुए पढ़ोगे ना, इफ यू प्रॉब्लम विद यू गाइज इज यू स्टडी ईच एंड एवरी सब्जेक्ट एज अ डिफरेंट एंटिटी. ओके, कि यहाँ ग्रोथ साइट सेंटर पढ़ा तो वो लिंक नहीं है. अब दिस थिंग इज लिंक्ड फ्रॉम एनाटमी एज वेल, जनरल एनाटमी. मैकल्स कार्टिलेज, उसके क्या रेमरेंट्स होते हैं, मैकल्स कार्टिलेज का क्या फॉर्म करता है, इट इज़ नॉट इन्वॉल्व इन द ऑसिफिकेशन ऑफ मैंडिबल. तो डिसइंटीग्रेट होकर क्या बनता है, किस बोन को बनता है, देन यू मूव टुवर्ड्स एनाटमी. बट ऐसा नहीं कि वो ऑर्थो से लिंक नहीं है, और एम्ब्रियोलॉजी, ये सब कुछ एस्पेक्ट. सो यू शुड स्टडी ईच एंड एवरीथिंग. अब मैंने आई हैव डिस्कस, यू कैन स्टडी 2-3 सब्जेक्ट्स एट वन टाइम. इफ़ यू स्टडी इट लाइक दिस अ स्टोरी, अगर आप मैप करते हुए कि लाइक हाँ ये एनाटमी में ये था, ये सर, बिलीव मी at one point you will be revising I think 5-6 subjects at single time. But if you study each and everything separately, अब इसी टाइम पे किस टाइम पे क्या फॉर्म हो रहा है, इट कम्स अंडर एम्ब्रियोलॉजी ऑल्सो, टेराटोजन इफेक्ट, ओरल पैथोलॉजी ऑल्सो, क्या सिंड्रोम हो सकता है, एवरीथिंग इज डन. दैट इज हाउ आई यूज्ड टू स्टडी. ओके, देन वो एक मैप होते जाता है चीज़. एंड कहीं भी कोई पॉइंट याद नहीं, जस्ट गो बैक. ये एक मास्टर क्लास एंड ऑल इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस. एवरीवन, मोस्ट ऑफ यू गाइज विल हैव दीज क्वेश्चंस. आई एम नॉट टेकिंग on something new from my own end, like something exclusively which I have. Okay, what we are discussing here is how to answer, go about these questions. Okay, and how to remember them, and what other questions can go. And next thing, never look at a PYQ with the thought process. I always say that ये question repeat होगा, इसको रट लेते हैं. No, from your day you start studying till the time you appear for exam, I think you would have seen lakhs of questions. It's not possible for you or anyone to remember that each and every MCQs with option and answer. अगर concept समझे बिना just mug up करोगे, bound to fail at that time. Okay, so that's just the way I used to study, or by understanding concepts. That's why with each and every question I'll try keep what other things, points related to that particular topic or question. So if you know, very well. If you don't know, post this session, 9 PM we end, 9 to 10 PM you can go through your notes and just go through that particular point, so that it refreshes up your mind again. बट हाँ, अगर ये अभी इस पॉइंट से आप अटेंड कर रहे हो कि आई टोल्ड यू मैंडिबल में 2 होते हो, जस्ट राइट इट एंड देन डन एंड डस्ट. नो, कल सुबह तक ही भूल जाओगे. ओके, सो आई होप दैट वाज इंफॉर्मेटिव. एनी हाउ, मूविंग अहेड, नेजल बोन ग्रोथ कंप्लीट्स एट what age? So now you see this question, it's part of post-natal development in orthodontics, part of embryology as well, part of oral pathology as well, part of anatomy as well.
सो दैट वो जो नीट में एक डिवीजन मिलता है ना 14 क्वेश्चंस का, वो कभी भी वो नहीं होता वैलिड, बिकॉज ईच एवरी क्वेश्चन इज लिंक्ड. वो इट्स जस्ट अ वे टू मतलब आई डोंट नो व्हाई दे गिव दैट डिवीजन कि जस्ट द वे टू टेल यू दैट हाँ क्वेश्चन आएगा, ऐसा मत समझना कि वो टॉपिक से नहीं आएगा, सब्जेक्ट छोड़ दो, विच यूज टू हैपन इन द पास्ट. But each and every question is linked from every subject. Medical science is not something which is isolated. Okay, so let's see. Nasal bone growth completes at what age? अब इसमें दे दिया ग्रोथ कंप्लीट्स. नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है स्टार्ट्स टू ऑसिफाई एट व्हाट एज. ये तो कंप्लीट्स पे पूछ रहा है. यू कैन ऑल्सो गेट स्टार्ट्स टू ऑसिफाई. तब वो PYQ भी हो गया, बस उसका मॉडिफाई उन्होंने कर दिया इंट्राम्योनिकली कौन से मंथ पे. अगर नहीं ऑसिफाई होगी तो कौन सा सिंड्रोम होगा, उसके क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, बाइंडर सिंड्रोम एंड ऑल, इफ यू हैव रिमेंबर. Anyhow, coming to this question number 3. So the answer is 10 years. Okay, so it is completed around 10 years of age. Post that there is growth of only cartilage and soft tissue. Okay, so again what I mean to say is post 10 years the nose continues to grow, so there is remodeling of only soft tissue plus cartilage. So what happens, the nose prominence increases. So what will happen, प्रोफाइल की कॉन्वेक्सिटी बढ़ेगी. सो हम शुरू हुए थे कहाँ से, हम पहुँच गए सॉफ्ट टिश्यू चेंज पे. तो कॉन्वेक्सिटी बढ़ेगी तो क्या मतलब है, क्लास 2 प्रोफाइल बनती जाएगी. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन, इंडियन पॉपुलेशन हैव अ क्लास 2 प्रोफाइल और you can say convex profile. Mild to moderate convexity is a natural thing in everyone. हमारा एम हर में नहीं होता कि उसको स्ट्रेट बना दे जाए, provided the race is from the Indian population range. Okay, anyhow, next question, a pretty easy question, but this question was थोड़ा बड़ा हो जाता है, स्क्रीन भर के क्वेश्चन मिल जाता है तो स्टूडेंट्स आते हैं वहीं पैनिक कर जाते हैं, इतना बड़ा क्वेश्चन पढ़ने में टाइम चल रहा है, सेशन एंड हो जाएगा, तो दिस स्किप. बट अगर ठंडे दिमाग से दे वुड हैव रेड दिस क्वेश्चन, जिसको ऑर्थोडोंटिक्स नहीं भी आती वो भी बता देता है क्वेश्चन का. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, क्वाड्रेंट ए will have more anchorage than B, C will have more than D, B will have more than C, D will have more than A. अब इसमें फिगर में कुछ नंबर्स लिखे हुए थे. इट वॉज अ इमेज बेस्ड क्वेश्चन विच इज केम. सो A, B, C, D it was divided into 4 quadrants. Okay, and numbers were. So technically if you when you don't know the orthodontics, you just have to sum it up and tell किसका सम ज़्यादा है, and based on that you have to tell which statement is correct out of 1 2 3 4. सो हाँ, टाइम टेकिंग क्वेश्चन था पढ़ के और ये सब करने में, बट इट वॉज समथिंग जो मतलब ऐसा था कि जस्ट दे दिया ही. अगर ग्रॉसली भी यू चेक तो ए और डी की तो ज़्यादा हो नहीं सकती. दैट लीव्स अस विथ बी एंड सी. ओके, बी और सी में सम देखो तो सेकेंड मोलर का तो बराबर ही है, 533 प्लस 254 ऑब्वियसली बड़ा होगा, तो बी सबसे ज़्यादा है, सी कम है. एंड अकॉर्डिंगली यू कैन मार्क द स्टेटमेंट. आई ऑल्सो डोंट नो, आई नीड टू सम इट अप. ओके, सो यस आई हैव रिटन, सो इट्स आंसर इज 2. स्टेटमेंट बी एंड सी आर करेक्ट. So what is this? This is a Freeman's anchorage value diagram. Okay, so based on the root surface area or the periodontal area, anchorage values are defined. Okay, so what other question can come? Highest किसकी होती है, तो उसकी वैल्यू याद रख लेना फर्स्ट मोलर की.
सेकेंड फर्स्ट मैंडिबुलर मोलर की कितनी होती है 475, लोएस्ट किसकी होती है तो मैंडिबुलर सेंट्रल और कितनी होती है बस ये 3 वैल्यूज न्यूमेरिकल डेटा याद रखें। ओके, एंकरेज टॉपिक, रिसेंट टाइम में एंकरेज टॉपिक से टैड्स बहुत टेम्पररी एंकरेज इम्प्लांट और ऑर्थोडोंटिक इम्प्लांट्स बोथ इमेज बेस्ड टाइप और assertion reasoning type, factors influencing its primary and secondary stability have sort of become important. Assertion reasoning particularly ये factors primary and secondary stability जो इसको influence करते हैं, समझ के उसमें रटने वाला कुछ नहीं है बिकॉज जो इम्प्लांट के प्राइमरी स्टेबिलिटी और सेकेंडरी स्टेबिलिटी के फैक्टर्स है प्रोस्थेटिक इम्प्लांट is roughly similar to one what is where with TATs. So again, दो अलग टॉपिक्स पर कॉन्सेप्ट रिमेन्स द सेम, खाली मटेरियल इनका अलग होता है हमारे टैट्स का एज कंपेयर टू प्रोस्थेटिक इम्प्लांट। ओके, सो यू अगर आपको उसके याद है तो ठीक है, सेम ही है, ऐसा नहीं है इसमें कुछ अलग प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेबिलिटी के कॉन्सेप्ट है। Next question, again an image based question. Function of the component marked: helps in passive expansion of both arches, prevents lip trap, improves stability of the appliance, assists in maintaining the arch form. So the green arrow, I think it's visible on the screen. Yes, what is the function of this component? ABA. So this component also known as buccal shields. First of all, what's the name of this appliance? Sorry, we should start from there. The name of this appliance is Frankel functional regulator. It's a myofunctional appliance. नेक्स्ट PYQ, अगर किसी ने आई थिंक 15-16 टाइम का पेपर देखा हो, उन्होंने पूछा था व्हेन इज दिस अप्लायंस गिवन, सो उसमें था अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन, लेट मिक्स्ड डेंटेशन, ब्ला ब्ला ब्ला। जब स्पेसिफिकली फ्रैंकल के बारे में पूछा है तो फ्रैंकल अप्लायंस इज ऑलवेज गिवन इन अर्ली मिक्स्ड डेंटेशन, नेवर इन लेट मिक्स्ड डेंटेशन। Okay, it's always given in early mixed dentation stage. So ये पूरे पीछे आते हुए coming back to this question. Now इस एग्जाम में उन्होंने इस इमेज को दिखाते हुए उसका फंक्शन पूछ लिया. Okay, so these are buccal shields. They are generally, इसके दो फीचर होते हैं. Okay, yes you are right, it's FR2 and it's given in early mixed dentation. इसके दो how it's constructed. First of all, the margins, ये margins तो दिख रहे हो, they go deep into vestibule. Say they are so deep that patient को जब हम appliance देते हैं, it pains whenever he is speaking. Okay, that speaking is some sort of kind of a exercise. That's why it's also known as oral gymnast. इस appliance को oral gymnastic exercise appliance भी कहते हैं. So it impinges on the vestibule and it is so painful. So what does it do? When it impinges, it pulls the vestibule.
सो जब वेस्टिबुल पुल होगा तो उसके नीचे क्या अटैच्ड है, बोन, सो बोन भी एक्सपैंड होगी, सो इट हेल्प्स इन पैसिव एक्सपेंशन ऑफ बोथ द आर्चेस. नेक्स्ट, इट शील्ड्स द, ये मैं फंक्शंस क्यों बता रहा हूँ कि नेक्स्ट एग्जाम में इसके फंक्शंस भी पूछ सकते हैं. ये तो उसका फंक्शन है, मतलब हाउ इट डज दिस फंक्शन. इट शील्ड्स द एक्टिविटी ऑफ बक्सिनेटर मसल. सो व्हाट विल हैपन, बक्सिनेटर की एक्टिविटी खत्म हो गई, अंदर की बोन्स पैसिवली एक्सपैंड करेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन, ये अप्लायंस किस ग्रोथ थ्योरी पे बेस्ड है. आई थिंक ये भी क्वेश्चन कभी आया है या नेक्स्ट 2025 में पूछा गया, आई डोंट नो. ये अप्लायंस किस ग्रोथ थ्योरी पे बेस्ड है, इफ एनीवन कैन टेल. Yes, so it is based on functional matrix hypothesis. So coming to the other options, prevents the lip trap. So अगर अगले एग्जाम में कंपोनेंट ये मार्क कर दिया, मैं इसको डिफरेंट पेन से ले लेता हूँ, दिस प्रिवेंट्स लिप ट्रैप, ऑप्शन बी. इम्प्रूव्स स्टेबिलिटी ऑफ द अप्लायंस, मतलब अप्लायंस बाहर नहीं गिरना चाहिए, तो उसके लिए होते हैं ये वायर कंपोनेंट्स. assist in maintaining the arch form. I think every component assists in maintaining that, so there is no specific component. Mainly A or B आपका important है, which can be asked. I don't know what is palliates. What are you trying to ask here? ना palliates मेरे को नहीं समझ में आया. Okay, if you can elaborate, so if it's linked I can help you with that. Otherwise we'll move ahead to the next question. What does the movement to force ratio represent in the orthodontics? So in your exam you generally get 4 options. Since this paper is made by me, I gave you 6 options, and there are chances that more than one option can be correct. So think and answer accordingly. What does the movement to force ratio represent in orthodontics? Greater than equal to, it's not always one theory book given lip pad given as palliates, sir. No, I don't think I have read that. They're just known as lip pads only. And also check if that's so. Meanwhile you can go to the next question. D, BAD,
सो लेट्स सी द क्वेश्चन। पहली बात है मूवमेंट टू फोर्स रेशो होता क्या है। सो m इज द काउंटर मूवमेंट डिवाइडेड बाय द फोर्स अप्लाइड। फोर्स अप्लाइड कहाँ से होती है? द ऑर्थोडोंटिक अप्लायंस, जो भी ब्रैकेट वायर जो भी, एंड काउंटर मूवमेंट जो होता है वो बॉडी जनरेट करती है। और इन दोनों का रेशो हमें कुछ बताता है। वो क्या बताता है वो हमें बताना है। ओके, आई होप I am clear until now. Okay, if there is any doubt or confusion, anything you're not able to understand what am I explaining, you can very well write in the comment section. Okay, so क्या बताता है? We need to know the type of tooth movement produced. Yes, definitely, whether it will be uncontrolled tipping, controlled tipping, bodily movement, okay, torque, root uprighting, on what. नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ टूथ मूवमेंट। ये एक टूथ है, उस पर फोर्स लगाई, ओके, द फोर्स अप्लाइड एंड द काउंटर मूवमेंट, इसकी वजह से ऐसे हो जाए काउंटर मूवमेंट जनरेट हुआ। ओके, सो द डायरेक्शन एंड द अमाउंट ऑफ काउंटर मूवमेंट जनरेटेड विल डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ डायरेक्शन इन विच द टूथ मूव्स। तो यस, बी इज ऑल्सो करेक्ट। Force of tooth movement. Force of tooth movement, the ratio does not tell the force applied to the tooth movement, so this option is not. Torque applied to the tooth. अब torque लग रहा है, control tipping हो रही है, what is happening is depend. तो torque applied हर में नहीं होगा. Okay, so this also gets correct. Degree of intrusion, again it depends upon the force from which direction from which we apply force. Again incorrect. Resistance of the periodontal ligament to applied force. No, the counter movement is not necessarily generated from the periodontal ligament. It's the result of surrounding bone. Okay, inherent property of the. So only option A plus B is correct. ये तो मेरा पेपर हो गया जिसमें आई टोल्ड यू मल्टीपल। अगर ये सिंगल ऑप्शन टाइप करेक्ट क्वेश्चन में आ जाए, then what will you mark, A or B? So in that case, A more than B. The type of tooth movement produced over the direction, because there is certain controversy. Direction generally it is said कि front से ही apply करेंगे. It's not like we can apply from anywhere else. Bracket is placed on the buccal side only. Okay, so that's why A better than B as compared if it comes as a single answer type question. It comes as a multiple, then both A and B are correct. Okay, so hence I have written answer A. Next question. So biomechanics, controlled, uncontrolled tipping, okay, sliding sectional mechanics, one couple, two couple system. ये जस्ट सब टर्म्स मैं बोल रहा हूँ, ये जस्ट याद है, अच्छी बात है, नहीं गो थ्रू देम बिकॉज बायोमैकेनिक्स फॉर्म्स द क्रक्स ऑफ ऑर्थोडोंटिक्स. What type of forces should be applied in orthodontic fixed appliances for optimal tooth movement? A very easy question. मतलब किसी को ऑर्थो भी नहीं पता होगी, बिना देखे वो सोचे भी ये कैन आंसर करे. So I'm not going to waste my time. Light continuous heavy forces, intermittent high forces, rapid alternating forces. So the correct answer is light continuous force. Next, write your question. Which type of force is out of these options यही है, is responsible for root resorption in orthodontic tooth movement? ये तो एग्जाम में आया था. नेक्स्ट एग्जाम में ये क्वेश्चन है, which of these force is responsible for root resorption in orthodontic tooth movement? वाई नॉट 3? इंटरमिटेंट हाई फोर्स भी तो मतलब सेम ही है, हाई हेवी इंटरमिटेंट या इंटरमिटेंट हाई फोर्स.
Yes, you're right. Heavy intermittent forces, but 3 can also be correct now. So I won't waste your time. 2 is correct for this. ओके इंटरमिटेंट हाई फोर्स करके कुछ होता नहीं है ऑर्थोडोंटिक्स में. इट्स लाइट कंटिन्यूस और हैवी इंटरमिटेंट फोर्स. सो सिंपल आंसर ऑफ दैट. आई वोंट वेस्ट योर टाइम. पोस्टीरियर एयरवे स्पेसेस. यस यू आर राइट. हाइलाइजेशन एंड ऑल. सो यहाँ से हम पहुँच गए बायोलॉजी ऑफ टूथ मूवमेंट, थ्योरीज ऑफ टूथ मूवमेंट. ओके एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें ड्रग्स. किस ड्रग का क्या इफेक्ट होगा ऑर्थोडोंटिक टूथ मूवमेंट में, ये टेबल है, उसको अच्छे से गो थ्रू कर लें. ओके कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. पोस्टीरियर स्पेयरवे स्पेस इन एन एवरेज इज अबाउट 5 to 10, 10 to 15, 15, 20, 20 to 25 mm. So this airway space analysis lateral सेफ में किस एनालिसिस का पार्ट है? If anyone can tell. Name of the analysis in which anterior and posterior airway space comes as a parameter. वैल्यू तो अब तक एज आई टोल्ड यू क्वेश्चन मेरे ख्याल से जितने भी लोग एग्जाम में अपेयर कर होंगे 80 to 90% पीपल वुड हैव सीन दिस क्वेश्चन. एंड एंटीरियर पोस्टीरियर एयरवे स्पेस की वैल्यू सबने याद कर ली होगी. नेक्स्ट एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है. अब ये तो नहीं बोल सकते ना इट्स नॉट अ PYQ और समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स. सेम पैरामीटर में जस्ट उन्हें पूछ लिया कौन से एनालिसिस का नाम है, एंड आई हैव टोल्ड हिम. एयरवे एनालिसिस इज पार्ट ऑफ विच एयरवे एनालिसिस बिकॉज आजकल वाई आई एम आस्किंग बिकॉज ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया एंड ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी दे हैव बिकम इनसेपरेबल. मतलब 100% एक क्वेश्चन इन दोनों में से आएगा ही आएगा. यस यू आर राइट. इट इज मैकनमारा एनालिसिस. क्वेश्चन मार्क क्यों डाले? जस्ट टेल. यस मैकनमारा's analysis. मैकनमारा analysis is 100% done for a cases. मतलब must. In what cases do you do मैकनमारा analysis? So I won't ask you like myofunctional appliances. जब भी myofunctional appliance therapy देंगे उस cases में हम मैकनमारा analysis 100% करेंगे because it will tell us about the job position. Okay, so that's not important. उसमें कहाँ deep में जाने, but the important is this parameter किस analysis में and for what purpose this analysis is done. So airway and must for myofunctional cases. Okay, so the correct answer for this is option B, 10 to 15 mm. Okay, moving ahead. Interesting question ये जब आया था. Maxillary transverse deficiency can be camouflaged by which of the following compensatory mechanisms? Buccally placed tilted maxillary teeth, buccally placed tilted mandibular teeth, palatal placed tilted maxillary teeth, or lingually placed tilted mandibular. Now again, some said it was a multiple answer type question, some said. So I'll give you
the choice for this as greater than equal to 1 option can be correct as well. A question mark. The problem with this live and online thing is I am not able to see and ask the students. Have you been guys been sitting in front of me? I would have been able to gauge your thought process as well for this question and help you out. Now I just get you guys are able to see me, hear me, but I'm not able to see and hear what you are thinking. So if people think A, can be A or B. Exam है यार, you have to be specific. It's a objective type paper, not a subjective. ये भी हो सकता है, not a viva as well. Mark it or leave it. And we have the clock ticking as well on your head. Okay. सेक्शन बदल जाएगा टाइम खत्म होते ही. इतना टाइम एक पे ही सोचने में तो हो जाएगा. Anyhow, coming to the question. Now it says that maxillary transverse deficiency है. Okay. मतलब मैक्सिला ट्रांसवर्सली छोटा है, मैंडिबल बड़ा है. ओके, सो व्हाट कंपेंसेटरी मैकेनिज्म टू डू जिससे हमारी बक्कल ऑक्लूजन आ जाए. सो ये मैक्सिला है ऊपर, नीचे मैंडिबल टीथ है. सो व्हाट यू कैन डू, या तो मैक्सिलरी टीथ को बक्कली प्लेस या टिल्ट कर दो, या मैंडिबुलर टीथ को लिंगुअली प्लेस या टिल्ट कर दो, तो ऑक्लूजन मिल जाएगी. सो बोथ, इसमें ऑप्शन हुआ ए इज करेक्ट. बकली प्लेस मैंडल करोगे तो और सीजर बाइट में चला जाएगा, पैलेटी प्लेस मैक्सिलर करोगे और सीजर बाइट में चला जाएगा, और डी. सो ए एंड डी बोथ आर करेक्ट. ओके, और अगर ये आता है सिंगल ऑप्शन टाइप क्वेश्चन, so then D better than A, क्योंकि the thought process or logic behind this, why D more than A if it's a single answer type question, correct question, is that maxilla is already small, so it's very difficult, take the teeth, you cannot take the maxillary teeth out of the bone. Whereas mandible is normal. According to this question, if it's not written, we assume that mandible is normal. So we can do some amount of lingually tilt or placement of the teeth, because the cortical plates of mandible bone are thick, but maxilla is already small. You cannot take the maxillary teeth out of it. So by that logic, I can say that if it was a single answer type question, then D greater than A. Okay. So moving ahead, so I don't have options. It was a controversy. Some people said this question came, some said it was not came, some said this form of question came. So I just picked up the question, and without options I'm asking you, child chewing is converted to adult chewing pattern. Some said swallowing pattern, some said chewing pattern. So first question you can answer is at what age. I'm not giving the answer. 10A और 10B का क्या आंसर होगा, एज वाइज बताओ. चूइंग पैटर्न कब चेंज होता है, किस एज पे, और स्वॉलोइंग पैटर्न किस एज पे चेंज होता है. चलो इसको और घुमाते हैं.
स्वॉलिंग पैटर्न का ट्रांजिशन कब शुरू होता है और कंप्लीटली चेंज कब हो जाता है? सो यू हैव 3 क्वेश्चंस. 10 ए की एज बताओ, बी की एज बताओ, सी की एज बताओ. And I'll give you 45 seconds for you to answer this question. So in comment section, if write it as 10A, B, C, or whatever you know. If you don't know A about B or C, which A is for chewing pattern, B transition or swallowing pattern, C when the transition is completed. Age I want to know the age. ये 5-1 ही है या सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं? व्हेन द फर्स्ट, ये तो काउंटर क्वेश्चन आपने मुझसे पूछ लिया. As I told you, I am not here to dictate the questions which came. ये हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम बुक जो अवेलेबल है मार्केट में, सब में क्वेश्चंस अवेलेबल होंगे. The role of a teacher comes to help you out for the next exam, not to just dictate the questions. जो भी है 13, 14, 15 जितने भी क्वेश्चंस आए एंड उसके आंसर वो तो आपको बुक में ही मिल जाएंगे, या आजकल तो AI सर्च है, जस्ट टाइप इट एंड यू गेट एवरीथिंग. गलत हो तो किसी सीनियर से या कुछ, सबके कॉलेजेस में दे विल बी पोस्ट ग्रेजुएट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टू आंसर. And with this thought process only, I ask every one of you to look at each MCQ. कि एक सही है, 3 गलत है, तो 3 गलत से क्या गलत है, क्यों गलत है. If it's a numerical, okay, you cannot form. And if it's a subjective type question statement, what 3 other things can we form? That is what is known as mind mapping. Okay, so chewing pattern is converted to adult with the eruption and fully formation of permanent canine. That is why canine guided occlusion is the motto in prosthodontics as well. For ortho, we always intend to give class 1 canine relation. Molar relation 2, 3 कुछ भी हो हमें फर्क नहीं पड़ता, but class 1 canine should be there so as to have a canine guided occlusion, so as to have a proper chewing pattern, and this occurs by the age 12 years. Complete conversion. Transition. So transition starts with 6 months with the eruption, like he said, first primary teeth. Completed when all the primary teeth have erupted. Okay, so mature, develop by 18 months, and some say by 4 to 5 years, that is when they are completely in occlusion. So both are correct, 18 months to 4 to 5 years. Starts at 6 months with the eruption of primary incisors and completed by 18 months, and some say by 4 to 5 years. Why? When the primary teeth are all completely in occlusion. That's the reason they say, but better answer is 18 months. Next question, development of upper lip as a cleft lip and palate. So the question was compensatory mechanism pertaining to the small exam. I mean specifically it's talking about maxillary arch now. So you are talking about the previous question. Compensatory mechanism pertaining to small maxilla. No, that does not mean specifically for maxillary arch. See, technically, if I'll be honest with you, कोई भी कंपनसेशन खाली एक आर्च से नहीं होता है. अगर मैक्सिला स्मॉल है तो नेचर उसको कंपनसेट करेगा
बाय मैंडिबल को लिंगुअली प्लेस या टिल्ट करके टीथ को, और मैक्सिलरी टीथ को बकली प्लेस करके. Okay. Now, if the question is specifically asking that compensatory mechanism in maxilla for the maxillary teeth, so I don't think that would be the question, because अगर ऐसा question है तो then they won't be giving you these options of mandibular teeth at all. फिर तो मैक्सिलरी टीथ के ही रिलेटेड ऑप्शन देंगे जब मैंडिबल से उनको बात ही नहीं करनी. और मैक्सिला स्मॉल है, इसका मतलब दे आर पॉइंटिंग मीन्स what kind of camouflage will you attempt, means you have to do the camouflage, not the nature ने तो maxilla small करके छोड़ दिया. So that's why the better option would be D greater than E. So had it been a subjective, then yes, both things should go. Even clinically also we don't work on mandibular teeth only, we do both of them so as to gain buccal occlusion. But it's an objective paper, we have to point towards one, then D better than A, that is mandibular teeth lingual tilting, and reason I have told you so. Okay, so coming to the question, there are a couple of queries or statements. D, mandibular plus medial nasal process plus maxillary. Upper lip is formed by the fusion of medial nasal process and maxillary process. Right. So option B. So Mr. Roaster, you are saying reason explanation you are giving correct, but option you are marking it is incorrect, and the option correct answer is option D. Medial nasal and the maxillary process. So अब इस क्वेश्चन को आप ऑर्थोडोंटिक्स से लिंक करोगे कि एम्ब्रियो से, इट्स अप टू यू. सो दिस इज द डायग्राम. इंपॉर्टेंट इज डेवलपमेंट की एजेस, बिकॉज उससे लिंक होता है टेराटोजेंस. किस स्टेज पे किसने क्या टेराटोजन लिया मदर ने, क्या इफेक्ट हो जाएगा इन द सिंड्रोम, पियर रॉबिन एंड ऑल दैट, एंड क्लेफ्ट का फॉर्मेशन एंड ऑल दैट यू नो. नाउ दिस इज अ वेरी कॉमन क्वेश्चन, आई थिंक लास्ट मे वाले एग्जाम में भी आया था. डायमीटर ऑफ स्प्रिंग इज मेड ट्वाइस, हाउ डज द चेंज द इफेक्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द स्प्रिंग. शुड रीड ना, अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर तो, और आप बी और डी ऐसे में गलत कर दोगे तो इससे बड़ा ब्लंडर ही नहीं कोई होगा. ओके, सो इफ यू नो डोंट गेट एक्साइटेड, ये आता है. आई थिंक अभी इफ यू आर वेल वर्स विद द थिंग विच इज गोइंग आउट अबाउट दैट चाइल्ड फ्रॉम KBC, what is confidence, and nahi, I don't want to see the options, I will just answer. Okay, so I don't hope so that does not happen with you guys, that you read the question and you I know the answer, I don't need to see the options. इसमें ऑप्शन देख के ही मार्क करना पड़ेगा. there is now a host which is sitting in front of you who will mark it for you. Anyhow, coming back to the question, इसको नहीं पता तो just a detour था ये about this news. Diameter of spring is made twice. How does it affect the strength of the spring? So you know, it's directly proportional to the fourth power of diameter, inversely to the cube of length. Okay, so it will increase by 8 times. Okay, ये बिल्कुल ऐसे घोट के पी जाना ये चीज़, ये फॉर्मूला इन दिस, उससे लिंक हो जाती है टाइप वायर मटेरियल जो आपका डेंटल मटेरियल में आ जाता है. जीन रिस्पॉन्सिबल माल ऑक्लूजन. ओके, दिस वाज अ सर्टन, आई वोंट बी एक्सपेक्टिंग आंसर फ्रॉम यू. जिसको पता है ओके, नहीं पता तो इट वाज अ सर्टन कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन. पीपल सेड दैट नो, इट वाज नॉट रिलेटेड टू माल ऑक्लूजन. सम सेड इट वाज रिलेटेड टू क्लीडोक्रेनियल डिस्प्लेसिया. They were asking about the genes responsible, mutation responsible, which was for cleidocranial dysplasia. Okay, I accept that. So सबको पता है that will be FGFR gene from oral. Now
On the other hand, there were some students said that no sir, it was for malocclusion only. Okay, so I went back at that time, read, and when I found the options, so technically